class. Today we will fill our textbook portion of chapter number 7. So take textbook page number 51. You have to write it with me, okay? Yes. See, write one sentence about each of these houses. What we have to do? Here they have given a name of house and here you have to write one sentence about that house. Number 1 is stilt house. What is stilt house? What we will write? Stilt house किससे बना होता है? It is made up of wood or metal. और वो कहाँ होता है stilt house? Places where it rains very heavily. So here we have to write only one sentence. So what we will write? It is made on long pieces of wood or metal. Write it with me. It is made on long pieces of wood or metal. Now next is igloo. Write one sentence about igloo. Igloo is a house of snow. Igloo किससे बना होता है? Snow से. And it is found in very cold places. And igloo में कौन रहते हैं? Eskimos. What we will write? Igloo is a house built of snow. Igloo is a house built of snow. Now next is caravan. What is caravan? It is a mobile house. We can move it easily from one place to another. Yes या no? Yes. और caravan में कौन रहता है? Gypsies and people who work in a circus. Yes या no? Yes. So what we will write about caravan? It is a mobile house. Now next is houseboat. What is houseboat? Houseboat किसे बोलते हैं हम लोग? Wooden house made on a boat. और वो कहाँ देखने मिलता है हमें? In lakes of Kashmir and Kerala. Write with me. It is a wooden house made on a boat. Completed. Now take page number 53. Fill in the blanks. See number 1. Pakka houses are mostly found in dash and dash. Where do we find pakka house? In villages? No, villages में तो कच्चा house होता है. So where do we find pakka houses? In towns and cities. Write with me. TOWNS towns and cities. CITIES cities. Number 2. Usually dash make igloos to live in. Who make igloos? Igloos में कौन रहता है? Eskimos. ESKIMOS. Number 3. A tent is usually made of dash or dash. Tent किससे बनता है? It is made up of canvas or clothes. CANVAS. Canvas or clothes. 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 Number 4. We wear clothes to protect our body from. हम लोग क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट, देन
cold, rain, dust and insect. Why do we wear clothes? To protect our body from heat, cold, rain, dust and insect. Yes or no? Yes. Now number B is take the correct answer. What we need to do? We have to just tick near this correct answer. See number 1. What are पक्का houses made of? पक्का हाउस किससे बने होते हैं? ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टील. या मड, सीमेंट, बाम्बू एंड आयरन किससे बने होते हैं पक्का हाउसेस? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील. सो टेक केयर. नंबर 2. व्हाट आर कच्चा हाउसेस मेड ऑफ? कच्चा हाउसेस किससे बने हैं? स्नो, कैनवास एंड वुड. इससे बने हैं? नो. कच्चा हाउसेस किससे बने होते हैं? मड, वुड, स्ट्रो एंड बाम्बू. सो चलो टिक मार्क कर दो. यस. टर्न द पेज. टेक नेक्स्ट पेज. वाई डू पीपल मेक टेम्पररी हाउसेस? पीपल टेम्पररी हाउसेस क्यों बनाते हैं? टू कीप मूविंग इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी. एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सके इसके लिए या फिर एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने के लिए. टू कीप मूविंग इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो टिक इट. नंबर 4. Why do people living in hilly areas make houses with sloping roof? Sloping roof look pretty या फिर for snow and water to slide down easily. जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं वो लोग स्लोपिंग रूफ क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो प्रीटी लगे इसलिए या फिर स्नो एंड वाटर जो है वो इजीली स्लाइड डाउन हो सके. स्नो एंड वाटर इजीली स्लाइड डाउन हो सके इसलिए. सो फॉर स्नो एंड वाटर टू स्लाइड डाउन इजीली. नेक्स्ट. वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? हम लोग विंटर में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? कोल्ड एयर डज नॉट पास थ्रू देम और दे सोक अप विथ स्वेट. क्योंकि हमें ठंड ना लग जाए. सो व्हाट इज अवर आंसर? कोल्ड एयर डज नॉट पास थ्रू देम. नाउ नेक्स्ट इज मैच द टू columns. Here there are picture and here they have given you names. You have to match column A with column B. Rainy day. What do we use in a rainy day during monsoon? Umbrella. Very good. So match it with umbrella. Then next is gypsies. Where is picture of gypsies? Number A. Very good. Then cold day. What do we use during cold day? Sweaters. So where is picture of sweater? Number E. Then tent. Which is type of tent? Caravan. So match it. Then Kerala. What do we see in lakes of Kerala? Houseboat. So मैच कर दो उसे. Understood? Yes. Now number D is give reasons for the following. What you have to do? You have to write reasons. See number 1. People wear cotton clothes in summer. समर में लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. Yes या no? Yes. Why do they wear cotton clothes? Because cotton clothes soak up sweat from body and keeps it cool. Yes या no? Yes. Write it with me. They soak up sweat from body
and keeps it cool. See number 2. People in areas where floods are common make stilt house. ऐसे लोग जो वो एरिया में रहता है जहाँ बहुत जल्दी से फ्लड आ जाता है, वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. क्यों वो लोग ऐसा स्टिल्ट हाउस बनाते हैं? क्योंकि वहां पर उनके हाउसेस में पानी अंदर ना आ जाए. सो व्हाट वी विल राइट? So that water cannot enter in their homes. So that water cannot enter in their homes. Number 3. We wear a raincoat over our dress when it rains. Whenever there is rain, we wear raincoat. Why do we wear raincoat? Because it is made up of plastic which is waterproof. वो किससे बना होता है? प्लास्टिक से. एंड वो प्लास्टिक कैसा होता है? waterproof. As it is made up of plastic which is waterproof. Completed? Yes. Now see on page number 55 web chart is given. Yes. Here there is category of types of houses. How many types of houses we have learned? 4 types. Which were they? Pakka house, kacha house, then temporary house and special house. See here one example is given, flat. तो ये flat जो है it will come in which category? Pakka house. So write here P-U-C-C-A Pakka, H-O-U-S-E house. And here one example is given, flat. So next what will come? Which type of houses will come in Pakka house? Building and single storage house and bungalow. B-U-N-G-A-L-O-W bungalow. Then kacha house. What will come in kacha house? Hut. H-U-T hut. Then temporary house. Which are temporary house? Houseboat. Then tent, caravan. Here one is given, caravan. So next what we can write? Tent या houseboat. We will write tent. T-E-N-T tent. Now igloo. कौन सी कैटेगरी में आएगा इग्लू? स्पेशल हाउस. सो राइट हियर S-P-E-C-I-A-L special house. What will come in category of special house? Igloo. Then stilt. S-T-I-L-T stilt. Now next is types of clothes. How many types of clothes do we wear as per season? One is given, waterproof clothes which we wear in monsoon. तो समर और विंटर में हम लोग क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स एंड वुलन क्लॉथ्स. सो राइट विथ मी कॉटन क्लॉथ्स एंड इन नेक्स्ट बॉक्स वुलन क्लॉथ्स. So here our writing portion is completed. If your book is incomplete, then you watch this video again and complete it.